Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Sparsh Saxena. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और हम आप सभी श्रोताओं का आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में स्वागत करते हैं। आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डांग। Thanks, Sparsh. Yes, friends, let's start with the headlines. Domestic benchmark indices log losses for second straight session. Sensex falls over 300 points. Nifty settles below 25,000. Cabinet approves MSP hike for Rabi crops in 2025-26. And global crude oil prices rise as uncertainty about West Asia conflict looms. घरेलू बेंचमार्क सूचकांक लगातार दूसरे दिन आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 300 अंक से अधिक की गिरावट और निफ्टी 25,000 के स्तर के नीचे रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी की फसलों में एमएसपी में बढ़ोतरी की और पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के बाजार के ऊपर। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक लगातार दूसरे दिन आज गिरावट के साथ बंद हुए। दोनों ही सूचकांक लगभग 0.3% से अधिक फिसले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 319 अंक के नुकसान के साथ 81,501 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 86 अंक की कमजोरी के साथ 24,971 पर रहा। बात करें बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो दोनों ही सूचकांकों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। मिड कैप 0.1% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ और स्मॉल कैप में 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। And now let's take a look at the stocks in detail. The domestic benchmark indices today extended losses for second straight session. The BSE Sensex lost 319 points to close at 81,501 and NSE Nifty ended with a downfall of 86 points to settle at 24,971. Both the indices ended over 0.3% down. The broader market at Bombay Stock Exchange displayed a mixed trend. The mid-cap index ended marginally down 0.1%, while the small-cap index rose 0.3%. In the Sensex index, 25 out of 30 companies ended in the negative territory. In the laggards, Mahindra & Mahindra lost 2.8%, Infosys shed more than 2%, and Adani Ports fell 1.2%. Conversely, in the top gainers, HDFC and Bharti Airtel both increased over 0.9% each. Reliance gained more than 0.5% and Asian Paints added 0.3%. In sectoral indices at the BSE, 13 out of 20 sectors logged losses. In the top laggards, information technology declined more than 1%, auto slipped nearly 1%, and tech was more than 0.5% down. In the top gainers, telecommunications added over 0.9%, realty rose more than 0.5%, and energy added 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,021 companies advanced and 1,941 declined, while 106 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 104 companies hit their 52-week high, while 21 hit their 52-week low. So, Mr. Bhattacharya, talking about Sensex losing 319 points, if it's down by 0.3%, it's not really much, is it? It's just a correction. It is not much. You're right. It's a correction. But it also reflects various developments that are happening both in the country and outside. Let me start with the developments outside.
we are seeing an unusual and I would say unprecedented continued geopolitical tension, not only in West Asia, but even between Russia and Ukraine that is going on. There are threats, and even today there were attacks by Israel right into the heart of Lebanon and Beirut. So these are all developments that create tension in the market, not only in terms of what will happen to global trade, because remember this geopolitical tension that is taking place in the West Asian region is also one of the 60% of global trade passes through that region, the Hormuz Strait of Hormuz. So both global trade as well as the global economy is under some sort of a watch, and therefore the stock markets are reflecting that. That is point number one. Point number two, domestically we have seen some major Indian companies have come out with their results, which were not very, very impressive. I mean, whether you talk about Reliance, whether you talk about TCS, these results were a little underwhelming. And as a result, the stock market is reflecting that nervousness of whether the profit or profitability rise that one has seen in the last few quarters, that trend will continue or not. Number three is also remember that the Indian stock market is right now in the middle of independent India's the biggest initial public offer by automotive company. Now, when such a huge initial public offer is taking place in the stock market, what happens is that a lot of retail investors, they pull out their money from the stock market and park that money in the new offer. Even though, in spite of that, remember, in the first 2 days of that IPO, only 42% has been subscribed. So therefore, I mean, as important as the stock market development, the number, the Sensex, the Nifty that you just now mentioned, is equally important that even the country's largest IPO is facing some resistance in getting its entire issue to over 27,000 crore to be subscribed in one go, in one day. It is taking 2 days and only 42% have subscribed. And finally, you have to look at the mutual fund asset managers who in September have seen, after many months, a big decline in their assets under management. So I think if you take all these four factors under view, you will find that these developments are just par for the course of what happened in the stock market. If I can be a nitpicker, what happened to the mutual fund story? Well, the mutual fund story is, it is not yet, completely gone fucked, if I may use that incorrect expression. But I think it is just taking a pause. It is waiting for some reallocation of assets depending on what kind of trajectory that one sees. But the fact that the AUMs have declined in September, the net decline, is something that tells you that the retail investor was probably in a mood to pull out their money and be in the parking lot waiting for the next opportunity to come back, hopefully. भट्टाचार्य जी, आपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात की है. अगर हम देखें तो एफपीआई की सेलिंग इस बार, अगर पिछले 10 दिनों में हम देखें, 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में काफी बड़ी मात्रा में सेलिंग की गई. और आपने आईपीओ की बात करी. इस तरीके के आईपीओ अमूमन लिक्विडिटी बाहर कर देते हैं मार्केट से, और निवेशकों में एक निरंतर ये चिंता बनी हुई है कि आने वाला समय इलेक्शन का फेज है. यूएस इलेक्शन बहुत बड़ी एक इवेंट है. तो और साथ में आपने अभी जिक्र करा कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो निरंतर चल रहा है, और इवन रशिया यूक्रेन भी. तो ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या करें, स्पेशली वो इन्वेस्टर जो अभी मार्केट में एंटर किया है पिछले 2 से 3 साल में, जिसने वो गिरावट का माहौल देखा ही नहीं है. तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? जो इन्वेस्टर पिछले 2-3 साल में मार्केट में उनका एंट्री हुआ है, मैं समझता हूं उनके लिए अभी भी कोई चिंता की बात नहीं है जी. क्योंकि अगर आप मार्केट के रुख को देखें, अगर 2 साल की अगर ट्रेजेक्टरी को देखें, अभी भी मार्केट जो जिस
स्थिति में है उसमें बहुत ज्यादा हानि तो मैं नहीं कहूंगा, पर कोई लॉस अभी तक नहीं हुआ अगर जो इन्वेस्टर 2 साल पहले इस मार्केट में आया था। जी जैसे हम इस प्रोग्राम में बहुत बार कह चुके हैं कि आपको ये देखना है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। इस मार्केट में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं पर आपको जोखिम लेने की कोई चाह नहीं है, रुचि नहीं है, मैं समझूंगा ये मार्केट आपके लिए नहीं है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, जो आपको रखना चाहिए, मैं समझता हूं कि ये मार्केट अभी भी अपने, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं जूस, पूरा जूस अभी इसका निकल नहीं गया है, थोड़ा बहुत जूस अभी भी बाकी है। जी Despite the fact that about 52% of people invest in FDs, and although some senior citizens may think that the rate of interest has fallen down, but if you compare to global standards, our rates of interest are very good at 7% plus, and if you are super senior citizens, it goes 0.5% up. Still, we see a lot of maybe youngsters or millennials moving from the bank deposits to the stock markets. Do you see that trend happening, and how do you view that? That trend is taking place. It has grown roots, and for a variety of factors. I think the country, India as a country, is gradually transiting from being a country of depositors to country of investors. Now, from savers, you are becoming investors. Now, Right. this is a very important transition that is taking place, partly for the demographic change, and partly because the banking system is facing inherent challenges of providing the kind of interest earnings as an income route for the depositors. So as a result, what is happening is there are many young people who have age on their side. They will rather go in for the stock market. They will rather be an investor than be a depositor. So what we are seeing right now, given India's growth trajectory, a nation that was largely known as a nation of depositors have now become savers, have now become investors. So they are investing in the market. So I think that trend will continue. And at least till, as long as this country still remains young, I would imagine that the investment phase will remain unimpeded and uninterrupted. It's a wonderful perspective you've given, savers to investors. We never thought of it that way. Yeah. You always have great ideas. और एकेबी ने एक बात और कही है कि बी बुलिश ऑन इंडिया। Absolutely. अभी यंगस्टर्स की बात चली है तो एकेबी में आपसे पूछना चाहूंगा कि 65% जो हमारी आबादी है लगभग युवाओं की है, और हम देख रहे हैं निरंतर डीमैट अकाउंट जो खोले जा रहे हैं उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, और हमारे पास कई कॉल्स आते हैं, हर वर्ग के लोग सुनते हैं, हर क्षेत्र के लोग सुनते हैं, उसमें युवा भी बहुत हैं। तो उनका हर बार ये क्वेश्चन एक जरूर रहता है कि वो आने वाली जो टेक्नोलॉजी ईवी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इन सेक्टर्स की ओर उनका ज्यादा रुचि है, ज्यादा रुझान है। आपका उनको क्या सजेशन रहेगा? मैं कहूंगा कि जो आने वाली जो टेक्नोलॉजी लेड जो एरियाज जो हैं, आपने ईवी की बात कही, और मैं उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेसेस की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव जो हमारी जो आर्थिक गतिविधियों में जिस तरह से ये आ रहा है, मैं समझता हूं कि जो कंपनियां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगी, उन्हीं को प्रोडक्टिविटी गेन्स ज्यादा होंगी। और ये प्रोडक्टिविटी गेन्स शायद हमारी जो जॉब मार्केट के लिए एक मैं समझता हूं कि एक पूरी तरह से एक पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरह से जो ट्रेडिशनल जॉब्स जो हैं उनके ऊपर एक प्रकोप तो पड़ता है। पर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अगर हम अपनी स्किलिंग इंडस्ट्री और एजुकेशन में वही उसी तरह जोड़ दें तो ये चैलेंज हम सामना कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और नजर डाल लेते हैं रुपए की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की बढ़त के साथ 83 रुपए 99 पैसे के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान 103.24 के स्तर पर रहा।
And let's take a look at the cabinet decision जी today. बिल्कुल केंद्र सरकार ने आज विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी। रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है दैट द प्राइस शुड बी एटलीस्ट 50% अबव द कॉस्ट। वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। उस आधार पे जो 6 रबी क्रॉप्स हैं, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है, बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है, ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है, मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज बढ़ोतरी की गई है। Mr. Bhattacharya, MSP has always been a core of farmers' demands. But also, this is also true that only about 6% of farmers avail MSP. So, how do you view this? Well, even if 6% of farmers avail of it because they come to the market, this Rabi season MSP has a different significance because except wheat, every other commodity for which the MSP has been announced at higher rates is actually a cash crop. In the sense they are oil seeds, and they are pulses. Now, what happens with most pulse growers, lentil growers, or oilseed growers, they actually come into the market and they will benefit because these are grown not to keep it home or consume at home at a marginal farmer's level, but they are actually used by the farmers to come to the market. So, therefore, the MSP for them is a net gain, in the sense that you get the market, that MSP, the minimum support price, which allows also the market price to stay above that level. So I would say that yes, I agree with you that in the normal sense, an MSP, when, let us say in the Kharif season, where it is paddy and wheat, but this time in the Rabi season, it's a small portion of wheat and the rest of them are all cash crops. So yes, the MSP this time has actually means a lot for the financial benefit for the farmers who grow them. And by increasing the MSP, the government is also promoting farmers to grow lentils and oils, especially mustard, because we import a lot of export. So this is one way, in a way, that also. Absolutely, because it's to gain self-sufficiency in crops where we are still import dependent. Also, remember these pulses and oil seeds come from countries with which has got strategic implications also. So I think if you have strategic relations with, let us say, with Canada, which exports a lot of pulses to us. Yes. Now it's very important to grow your self-sufficiency, increase your self-sufficiency to a point where you can meet your domestic demand internally. Absolutely. और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दुनिया भर के कुल डिजिटल लेन देन का 46% हिस्सा भारत में होता है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय 6G सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि इस वर्ष अगस्त में 2 अरब 75 करोड़ डॉलर के लेन देन में से करीब 1.5 अरब यूपीआई के माध्यम से हुए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक के लिए साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। संचार मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत 6G प्रौद्योगिकी में विश्व का अग्रणी देश होगा। AKB तकरीबन 1.5 अरब जो है यूपीआई के माध्यम से होना, ये कितना बड़ा एक कदम है। और दूसरी चीज ये कि ये क्रांति है, यूपीआई डिजिटल लेन देन जो है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भारत की जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो निर्माण हुआ है और उसका जो वृद्धि भी हुई है, प्रसार भी हुआ है, वो हमारी देश की जो आर्थिक जो हमारी जो स्ट्रेंथ जो है उसमें काफी सहायक रही है। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जो 1.5 अरब की जो ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, उससे ये क्या हो रहा है 1.5 अरब डॉलर की, उससे एक तो होता है कि जो प्रोडक्टिविटी गेन्स होती हैं,
दूसरी बात यह है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वो कम होता है, और इस वक्त सरकार इन ऐसे ट्रांजैक्शन को जरा इनकरेज करने के लिए थोड़ी बहुत सब्सिडी भी दे रही है। पर मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक चुनौती है और एक अपॉर्चुनिटी है जो हम आगे इसको ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल। Mr. Bhattacharya, have we saturated on the UPI front because 19 of the G20 nations now are in advanced stage of development of CBDCs, that is central bank digital currency. You think it's time to move beyond UPI and get down to digital rupee? Well, you should never say no to technology. If there is a digital currency which can give you a better experience, better value for money, certainly it's fine. But we need to understand that what exactly digital currency is going to be. Now, what is UPI? UPI is allowing you and me to exchange money without actually touching any cash notes. So in that sense, is it a digital currency of a different type, or is it still, I would say, does it come under the old definition? So I think there's a lot more discussion, debate that needs to happen. Yes. We should not say no to new technology, and digital currency is certainly one of them. Maybe there may be a possibility of digital currency and UPI can meet halfway, and we might still retain and expand the use of UPI in our daily transactions. An interesting observation is, since we are discussing this, is that US is still on plastic money, but we have bypassed plastic. Now we are hardly using the card. Absolutely. We have straight away moved on to UPI. Absolutely. So that means we've made a jump from the normal to the UPI. All right, let's move on. The World Telecommunications Standardization Assembly, WTSA 2024, is underway at Bharat Mandapam in New Delhi. The WTSA is the governing conference for the standardization work of the International Telecommunication Union, the United Nations Agency for Digital Technologies, organized every 4 years. This is for the first time that ITU WTSA is being hosted in India and the Asia Pacific. The platform is a pivotal global event that is bringing together more than 3,000 industry leaders, policymakers and tech experts from over 190 countries representing telecom, digital and ICT sectors. Here's more from our correspondent. The event will provide India an opportunity to play a key role in shaping the global telecom agenda and to set the course of future technologies. Indian startups and research institutions are set to gain critical insight into developing intellectual property right and standard essential patents. Talking to Akashvani News, one of the participants from Germany, Anita Dohler, said India will play a significant role in the telecom market as it is the second largest mobile network in the world. It's very impressive with India having achieved so many developments in the last years, and I think it will be extremely important for everyone globally to work together going forward, and India definitely will play a significant role, for instance having the second largest mobile network already installed, and we look forward to collaborate. Another participant from Ghana, Nana Akosua, said India is giant in the telecom sector and it has more to offer to the world. My name is Nana, and I think this is a very important meeting. We are going to make standards. This is where we have a lot of regulators, all the telecom giants here. So all outstanding issues that we want to have for the next 4 years with regards to standardization, I believe that we are going to have it done during this period. And then we are going to have the interesting part is that we are going to have our leaders for the study groups for the next 4 years. So that's also an interesting one. And all the resolutions that most of our countries we want to be modified and add, we believe that before we leave here, we will have accepted most of them, and then we will know the way forward for the next 4 years. During this 10-day global event, several sessions on theme based on the need and future of telecom industry will be organized. They include crafting the future of innovation, common user profile for personalizing audio-visual media, data security and efficiency, and bridging the digital divide. Dipendra Kumar for Market Mantra.
Well, India becoming a hub of international conferences, especially related to economy. Another one happening, the 8th edition of India Mobile Congress, IMC, is being held in New Delhi. The 4-day event is showcasing India's innovation ecosystem. This event features over 400 exhibitors, around 900 startups, and participation from 120 countries. Our correspondent reports that leading telecom companies and innovators are highlighting the advancements in quantum technology and circular economy at the event. India Mobile Congress is Asia's largest digital technology forum for showcasing innovative solutions, services and state-of-the-art use cases for industry, government, academics, startups and other key stakeholders in technology and telecom ecosystem. The event also aims to showcase more than 900 technology use case scenarios, host more than 100 sessions and discussion with over 600 global and Indian speakers. The event spotlights on 6G, 5G use case, cloud and edge computing, IoT, semiconductors, cybersecurity, green tech, SATCOM, and electronic manufacturing. Talking exclusively to Akashvani News, an international exhibitor said that IMC is helping them to showcase their products and services to the potential buyer under the one roof. It's great. I've been all around the world, but India, it's still really growing and there are lots of opportunities for us. So we've been really excited to be here this week. It's amazing how much opportunities we've had. Another international exhibitor has expressed their excitement about showcasing their products and services at India Mobile Congress. India right now is building up the smart city and a lot of the AI, a lot of the new generation communication innovations. The 4-day event will culminate on 18th of this month. Sakleen Akhtar for Market Mantra. आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। 5 प्रमुख एशियाई सूचकांकों में से 4 आज गिरावट के साथ बंद हुए। जापान का निक्केई 1.8% से अधिक टूटा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.8% की कमजोरी देखने को मिली। हांगकांग का हैंगसेंग और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.1% से अधिक फिसले। वहीं चीन का शंघाई कॉम्पोजिट 0.05% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में 0.5% से अधिक की कमजोरी देखने को मिली। जर्मनी का डैक्स 0.3% नीचे रहा। वहीं लंदन का फुट्सी 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहा था। U.S. stocks edged lower yesterday amid heavy sell-off in chip and energy sector stocks. The Nasdaq Composite declined over 1%, while the S&P 500 and Dow Jones Industrial Average both shed over 0.7% each. And oil prices rose today as uncertainty about West Asia conflict loomed in global crude market. Brent crude was trading marginally up 0.08% at $74.31 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate, WTI, was also trading 0.11% up at $70.66 per barrel when reports last came in. और अब सोने पर नजर डाल लेते हैं। सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.58% बढ़कर 76,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 1% बढ़कर 92,670 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। एक के बीच सोना लगभग 77,000 के आसपास टच कर रहा है। क्या कारण है? और फिर से आपसे भी एक सवाल यही कि सोना पहले 1 लाख या सेंसेक्स पहले 1 लाख? नहीं, मुझे लग रहा है कि जब स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत हलचल होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, तो जो सराफे बाजार में इसकी एक रिफ्लेक्शन होता है कि उसमें स्टेबिलिटी आती है, उसमें बढ़ती है। और 1 लाख किसको पहले मिलेगा, उसका श्रेय किसको पहले मिलेगा, वो मेरे ख्याल से एक एस्ट्रोलॉजी ने बता सकते हैं। मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल होगा। Right. Well, to wind up on another positive note, India's semiconductor market is set to exceed $100 billion by 2030, and this growth is driven by strong demand and government initiatives like production-linked incentive scheme. Well, thank you very much, Mr. Bhattacharya, for coming and sparing your precious time to be with us. Thank you very much. Thank you very much for having me. All right, friends, before we wrap up, here's a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices log losses for second straight session. Sensex falls over 300 points. Nifty settles below 25,000. Cabinet approves MSP hike for Rabi crops in 2025-26. And global crude oil prices rise as uncertainty about West Asia conflict looms.
Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor, Sparsh Saxena, signing off. Namaskar. Namaskar.